Good morning to all. In the last class, we have completed the institutional and technical reform. Now we are going to start a third reform in agriculture, that is a general reform. Other than technical and institutional reform, there were the other reforms also undertaken. First one is credit facilities. Cooperative credit societies and rural development banks have been established to meet the finance requirement of the farmers. A major change occurred after 1969 when India adopted social banking and multi-agency approach to meet the needs of the rural credit. Okay. Uh, जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर में अडॉप्ट किए गए थे इन बिटवीन द 1950 to 1990, there were some also general reforms were adopted, in which first is credit facilities for the farmers as well. तो उसमें क्या हुआ था कि डिफरेंट टाइप की कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ और रूरल डेवलपमेंट बैंक्स क्या हुए थे इंडिया में कंट्री में इस्टेब्लिश्ड हुए थे फॉर दी बेसिक मोटिव इज टू रिक्वायरमेंट ऑफ द फाइनेंस विच इज़ नीडेड टू द फार्मर्स वेन एवर ही और शी वॉन्ट टू प्रोड्यूस द crop production. Okay, there is major change occurred in 1969 where the 14 nationalization of commercial bank were established. कि 14 कि 1969 में क्या हुआ कि ये बहुत चेंजेस ये देखा गया कि कंट्री में 1969 में 14 कमर्शियल बैंक्स क्या हुए थे, नेशनलाइज्ड हुए थे. एंड देन 1980 में 6 कमर्शियल बैंक्स जो थे वो नेशनलाइज्ड हुए थे. तो उनकी वजह से बिकॉज ऑफ द नेशनलाइजेशन ऑफ द different commercial bank, the credit facilities is easily available for the farmers also. Then commercial bank also cater to the credit needs of the farmers. There are different credit societies, different regional rural banks, rural development, as well as different commercial banks are easily available for the credit facilities to the farmers. And for the NABARD is National Bank for Agriculture and Rural Development, was established to provide credit facilities to the farmer at the national level in the 1982. NABARD is the apex institution basically for the agriculture. कि एग्रीकल्चरल बैंक के लिए जो नाबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1982 for the credit facilities for the basically for the farmers. It was also established to provide the credit facilities to the farmers. It is also one reform which is provided to the farmers, especially in the agriculture sector. Second is irrigation facility. Irrigational facilities have been provided to the farmers to supply the required quantity of वाटर. ठीक है, इरीगेशन फैसिलिटीज़ भी क्या हुआ, प्रोवाइड किया गया बेसिकली फॉर दी क्वांटिटी ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट के लिए इरीगेशन फैसिलिटीज़ भी क्या हुई, रिक्वायर की गई. एट प्रेजेंट इरीगेशनल फैसिलिटीज़ कवर 50% ऑफ लैंड अंडर कल्टिवेशन एज कंपेरिजन टू 15% इन 1950. ठीक है, प्रेजेंट में क्या एट कि 50% क्या है एग्रीकल्चर सेक्टर में, एग्रीकल्चरल में इरीगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड होती हैं. और वही जब when we talk about the 1950s, there is only 15% is irrigation facilities are provided to the farmers. Dry farming has been encouraged and is in practice by the many farmers. There were also dry farming which is done by the farmers for the production of the different crop as well. Due to construction of the multi-purpose project and tube well, larger area have been also covered. There were large constructions of the different multi-purpose project like dam, canals, tube well also are constructed so that larger area of the farmers, larger area of the covers area have been covered, and the farmers are easily now available the lots of water for their irrigation facilities. Next is organized marketing system. There have been regular market being established in all part of the country. ठीक है, एक regular market
there were no regular market for the farmers. So in the agricultural sector in general form, there were regular market was also established for in all parts of the country के हर पार्ट में क्या हुआ, एक रेगुलर मार्केट को ऑर्गेनाइज किया गया. गवर्नमेंट हैज़ सेट अप market committees which govern these market and help farmers to get remunerative price for their product. ओके, गवर्नमेंट ने क्या किया कि डिफरेंट मार्केट की कमेटी को एक इस्टेब्लिश कर दिया, और वो सारी जो कमिटीज़ बनी थी वो क्या करती थी, फार्मर्स की हेल्प करती थी फॉर गिविंग देम अ रिम्यूनरेटिव प्राइस की. एक उनके गुड्स जो भी वो क्या करते थे, ट्रांजेक्शन्स कर रहे थे, प्रोवाइड कर रहे थे, उसको एक प्रॉपर प्राइस, जो बेसिक प्राइस है उसको वो प्रोवाइड करते थे for their product. Cooperative marketing society have also been established which help farmers to bargain for their product. There were also cooperative marketing society were established so that the farmers also bargain for their product. For their bargaining means ki in their fluctuation of the price of up and down, they can also do that कि bargain करते अपने product का अपने price commodity के लिए. तो ऐसी भी मार्केट सोसाइटी को क्या किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था. प्रोविज़न फॉर स्टोर हाउसेस हैज़ ऑल्सो बीन मेड. Okay, there were also warehousing facilities, buffer stocks, storage houses were also present there so that people can store their abundant amount of food crop which they produced. Next is minimum support price. It is a price support policy initiated by the government to encourage farmers to increase production. ठीक है, ये प्राइस सपोर्ट, ये सपोर्ट प्राइस था जो आप लोग क्लास यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 11th. ओके, कि दिस आर दी प्राइस सपोर्ट पॉलिसी विच इज़ इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया था टू इनकरेज फार्मर्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन सो दैट फार्मर कैन इंक्रीज देयर प्रोडक्शन. इन दिस पॉलिसी गवर्नमेंट फिक्सेज अ प्राइस हायर देन द मार्केट प्राइस. गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट फिक्सेज द प्राइस अबव देन द मार्केट प्राइस. ओके, वॉट एवर द मार्केट प्राइस प्रिवेल, government will fix the above the that market price, and if farmer are not able to sell their entire production at increased price, government offers to buy this surplus at increased price. अभी गवर्नमेंट क्या है कि अपने जो भी फार्मर्स हैं वो एबल नहीं हैं कि वो अपने सारे प्रोडक्ट को एक इंक्रीज्ड प्राइस में सेल कर सके, सो दैट गवर्नमेंट ऑफर क्या करती थी कि वो उन सरप्लस को बाई कर लेती थी एट द इंक्रीज प्राइस पे भी गवर्नमेंट क्या करती थी, अगर कोई फार्मर कैपेबल नहीं है कि उसको वो सेल कर सके तो गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली buy that product, buy that surplus at the increased price. Okay, government keeps this surplus in its buffer stock and uses it during the time of emergencies like flood, earthquake, famines, etc. Okay, government kept all the surplus with themselves and as a buffer stock, and they use at the time of emergencies like flood, earthquake, famines, drought, etc. At that condition, government uses that buffer stocks. Now, critical appraisal of the agricultural development. The land reform measures and green revolution were the greatest achievement of the Indian economy, okay, in enhancing the agricultural production and प्रोडक्टिविटी. जो लैंड रिफॉर्म मेजर्स थे और डिफरेंट ग्रीन रिवॉल्यूशन जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था वो क्या था, इट वॉज द बिगेस्ट लार्जेस्ट अचीवमेंट फॉर द कंट्री सो दैट देर वर इंक्रीजिंग इन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड द प्रोडक्टिविटी. वो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन एज वेल एज प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हुई. ड्यूरिंग दिस पीरियड there had been substantial increase in the agricultural productivity. Okay, this period में क्या हुआ, agricultural productivity were also increased. India became self-sufficient in food production. Okay, first of all, India was dependent on the other country for their food production, but now India is self-sufficient in food production. Land reform resulted in abolition of zamindari system. Due to introduction of the land reform, there were abolition of zamindari system also. We had marketed surplus for commercial farming. Now we are producing more goods for the commercialization of the products. Economists have found that
the nation becomes more prosperous, the proportion of GDP contributed by the agriculture as well as the proportion of population working in this sector decline considerably. Okay, इकोनॉमिक्स ने जो डिफरेंट इकोनॉमिक्स थे वो ये देखे कि इंडिया जो है वो और ज़्यादा प्रॉस्परस हो गई थी, बट द प्रपोर्शन ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूटेड बाय द एग्रीकल्चर, जो जीडीपी कंट्रीब्यूट हो रहा था थ्रू एग्रीकल्चर, एज वेल एज द प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन थी किसकी, प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जो पीपल वर्क कर रहे थे किसमें, एग्रीकल्चर सेक्टर में, डिक्लाइन कंसिडरेबली। वो क्या था, वो उसके कंपैरेटिवली क्या था, प्रॉस्परस तो हो गई थी, बट उसके कंपैरेटिवली जो हमारा जीडीपी का प्रपोर्शन था एज वेल एज जो पॉपुलेशन वर्क कर रही थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो क्या हो गया, डिक्लाइन करा। द प्रपोर्शन ऑफ जीडीपी बिटवीन 1950 एंड 1990 कंट्रीब्यूटेड बाय एग्रीकल्चरल डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली। तो जो प्रपोर्शन था जीडीपी का बिटवीन 1950 टू 1990 कंट्रीब्यूट बाय एग्रीकल्चर, ठीक है, जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन था बिटवीन 1950 से 1990 के बीच में बाय डिक्लाइंस, वो क्या हो रहा था, वो डिक्लाइन कर रहा था। ओके, बट देयर वाज नो डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन डिपेंडिंग ऑन इट, बट जो पॉपुलेशन डिपेंड थी एग्रीकल्चर पे वो डिक्लाइन नहीं हो रहा था। डिक्लाइनमेंट किस में हो रहा था, डिक्लाइनमेंट बस कितना प्रपोर्शन जीडीपी में जो इंक्रीज़ होना था वो जीडीपी में नहीं इंक्रीज़ हो रहा था। 65% of the country's population continued to be employed in agriculture till 1990, कि 65% जो कंट्री की पॉपुलेशन थी वो अभी भी क्या था कि एग्रीकल्चर में ही एम्प्लॉयड थी। इवन इट टिल 1990 तक लोग क्या थे, एग्रीकल्चर में ही इंगेज थे। एग्रीकल्चरल आउटपुट कुड हैव ग्रोन विथ मच लेस पीपल वर्किंग इन दिस सेक्टर। जो ये कहा जा रहा था कि जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है उसमें अगर लेस अमाउंट ऑफ पीपल भी अगर एम्प्लॉयड होंगे तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी में कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आना चाहिए। इट इज़ बिकॉज इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर डिड नॉट एब्जॉर्ब द एक्स्ट्रा पीपल वर्किंग इन एग्रीकल्चर। क्योंकि ये ऐसा हो रहा था क्योंकि जो इंडस्ट्रियल एज वेल एज आपके टर्शियरी सेक्टर थे, सर्विस सेक्टर थे, वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था। सो दैट सब क्या थे, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही एम्प्लॉयड थे। मैनी इकोनॉमिक्स कॉल दिस एन इम्पॉर्टेंट फेलियर ऑफ आर पॉलिसीज़ followed during 1950 to 1990. Many economics also said that it is the most important failure of all the policies which is made in the agriculture, like land reform and as well as the green revolution. Okay, these all are the basic and important failure for our policy as well. Now next is industry. We have read about the agriculture. Now the next is industry. Economics we know that the industry plays the most important role between the agriculture and the tertiary and service sector. It is the link between the agriculture as well as the tertiary sector. Economics have found that the poor nation can progress only if they have a good industrial sector. Okay, economics ने ये different economics said that poor nation can progress. A poor nation can progress only if they have good industrial sector. Industry provide employment which is more stable than the employment in agriculture. Okay, जो भी industries employment provide करती है वो क्या है, ज़्यादा stable है, ज़्यादा उसमें stability as comparison to employment in the agriculture. It promotes modernization and overall prosperity. जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो क्या, इट प्रमोट्स मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट करता है एज वेल एज प्रॉस्पेरिटी. इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट द 5-year प्लान प्लेस अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. ओके, इसीलिए क्या है, जो 5-year प्लान था बहुत ज़्यादा इसमें एम्फेसिस उसने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को भी दिया था. यू माइट हैव स्टडी in the previous chapter that at the time of independence the variety of industries was very
limited. Okay, we have already studied in the last chapter that there are the industries are very confined. The variety of the different industries are very limited. It was largely confined to cotton, textile and jute. It is only confined with the cotton as well as jute. There were only two big iron and steel firm. बस दो हमारे पास क्या थी, big firm थी. That was, one is iron and second one is steel. One is situated in the Jamshedpur and other one is situated at the Kolkata. But after independence we needed to expand the industrial base. Okay, अब इंडिपेंडेंस के बाद हमें क्या करना था, इनमें इंडस्ट्रियल बेस को डेवलप करना था. द बिग क्वेश्चन फेसिंग द पॉलिसी मेकर्स वॉज what should be the role of government and the private sector in the industrial development. देखो, the biggest question which the economics arises, different policy makers and economics arises that the what should be the role of government sector and what should be role of the private sector in the industrial development. की जो भी different government sector है as well as private sector है, उनका क्या रोल होना चाहिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है. इट वॉज फेल्ड बाई द पॉलिसी मेकर्स दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट could not be left to free play of market forces of demand and supply or to the private sector. ये जो different policy makers also said that कि we can't left everything on the demand forces, on the market forces. That is, demand and supply will decide what we have to produce and whatever the what we have to produce and how we have to produce, and the all is depend upon the private sector. We have to some interruption from the government also. उन्होंने ये कहा कि सारा जो चीज़ है हम प्राइवेट सेक्टर पे एज वेल एज गवर्नमेंट पे सब कुछ छोड़ नहीं सकते हैं. सॉरी, गवर्नमेंट नहीं, मार्केट फोर्सेस पे छोड़ नहीं सकते हैं कि उन्हें जो भी मन है वो दे कैन प्रोड्यूस. ओके, देयर शुड बी सम इंटरप्शन, कुछ इंटरफेरेंस थ्रू गवर्नमेंट भी होना चाहिए. रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, what were the different role of public sector or state in the industrial development. The big question facing the policy makers was what should be the role of government and the private sector industrial development. Okay, the first one is lack of capital to undertake investment. In the different role is, first one is lack of capital to undertake investment. Indian industrialists did not have the sufficient capital to undertake investment in industrial ventures required for the development of the economy. ठीक है, जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे, they don't have sufficient amount of capital to invest in the industries, okay, for the development of a country. Because of the lack of capital investment by the public entrepreneurs, government had to take capital investment through public sector undertakings. Okay, because of the lack of capital, private sector will not encourage to invest more and more money in the industries. So the government has to take some decision and some investment through the different public sectors undertaking. From different public sector industries, they had taken the some decision and invest much and more money for the development of the different industries. Okay, फिर उसमें ये हुआ कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो भी डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर थे वो लोग कुछ भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे. फिर गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, गवर्नमेंट ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया. गवर्नमेंट डिफरेंट जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी, डिफरेंट पब्लिक कंपनीज थी, उनके थ्रू क्या किया, enhancing the capital investment. Second is lack of incentives for the private sector. The Indian market was not big enough to encourage industrialists to undertake major project even if they had the capital to do so. Okay, जो our Indian market is not so big, so that industrialists will encourage and they invest their money. Still unless they have money, उनके पास क्या होता था, उनके पास मनी होता था, capital, they have capital, still they do not invest there because the size of the market is very low. There was a low level of aggregate demand because of the limited size of the
market. There were also a low level of the aggregate demand because of the market is very limited and the product which is available in the market is very confined. In simple word, there were no inducement to invest because of the low profitability. There were no profitability in the India's market, so any industries do not want to invest their money because the main motive of the private sector is to earn more and more profit. But there were no profit, so they do not encourage to invest their money in the Indian market. Social justice. The decision to develop the Indian economy on socialist line led to the policy of the state controlling the commanding height of the economy. In the second 5-year plan, it is decided that all the economy, all the sector and all the economy, and the main motive of the second 5-year plan was the development of the industries, the basic motive. So there were also a decision taken and the objective were taken that the state controlling the commanding height of the economy. Only the government on the public sector will control all the height of all the control of the economy, other than any individual. Only public sector will control all the economy, as the second 5-year plan puts it. Second 5-year plan में यही बोला गया था कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है, जो स्टेट है, स्टेट मीन्स गवर्नमेंट सेक्टर है, वही क्या करेगा, पूरी कंट्रोल करेगा किस पे, कि इकॉनमी की एक पर्टिकुलर हाइट पे उसको पहुंचाने का, कि वही पूरी इकॉनमी को कमांड करेगा. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी कुड बी अचीव्ड only through direct participation of the government in the process of industrialization. The socialistic pattern of society, the objective of the socialistic pattern, it is only and only achieved when there were direct participation of the government in the industrialization. ये जो ऑब्जेक्टिव हम लेके चल रहे थे, ये तभी अचीव हो सकता था when there is government will direct participation, when government will take the direct participation in the development of the industries. गवर्नमेंट क्या करे, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करे कि वो अपनी जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं उनका डेवलपमेंट कर सके. कंक्लूजन. दिस मीन्स दैट द स्टेट वुड हैव कंप्लीट कंट्रोल ऑफ दोज इंडस्ट्रीज़ दैट वर वाइटल फॉर द इकॉनमी. ओके, स्टेट क्या करेगा, पूरा कंट्रोल करेगा especially on those industries which is very important for the economy. The policies of the private sector would have to be complementary to those of the public sector. The private sector companies are taken as the supplementary, not complementary with the public sector. They will work together, not wholly control is given to the private sector. They are used as the complementary of the public sector. Next is industrial policy resolution. There were first industrial policy resolution come in 1948, which talk about the introduction of mixed economy in a country. Okay, mixed economy means there were there were participation of both, as well as public sector and private sector also. So in the second industrial policy, IPR 1956, it says that in accordance with the goal of the state controlling the commanding height of the economy, the IPR of 1956 was adopted. Only state will control the commanding height of the economy, so that IPR 1956 was adopted. This resolution formed the basis of second 5-year plan. The resolution is that the state will control the commanding height of the economy. On that, the IPR is established. The plan which try to build the basis for the socialistic pattern of society. The main aim was to establish the socialistic pattern, basically for the give the commanding height of the economy. एक इकॉनमी को कमांडिंग हाइट देने के लिए एक सोशलिस्टिक पैटर्न ये लेके चला गया कि देयर वर ओनली रोल ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट का ही रोल होगा. एलिमेंट्स ऑफ द IPR 1956, देयर वर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द IPR 1956.
फर्स्ट इज़ थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़. जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं उनको क्या है, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया. फर्स्ट कैटेगरी में क्या था, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ ओपन होंगी, ऑल इंडस्ट्रीज़ comes under the control of the government. In second category, schedule B, in this the private sector will supplement the effort of the state sector. Means they will help, private sector will help the state sector. And in the third category it come the remaining industries which does not come in the first and second in schedule, they will come under the private sector. Okay. The first category, schedule A, comprised industries which would be exclusively owned by the government. Okay. शेड्यूल ए में वो सारी इंडस्ट्रीज़ आएंगी जो कौन कंट्रोल करेगा, स्टेट, एंड गवर्नमेंट विल कंट्रोल. दिस कैटेगरी इंक्लूड 17 इसमें क्या थी, 17 इंडस्ट्रीज़ आई लाइक एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स, एम्यूनाइजेशन, ऑयल, रेलवे एक्सेट्रा. ठीक है, ये सारी एनर्जी, ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ थी वो इसमें आई शेड्यूल ए. शेड्यूल ए बी में consisted of the industries in which private sector could supplement the effort of the state sector. मीन्स कि प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, सप्लीमेंट करेगा कि जो भी स्टेट है, जो भी स्टेट के जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो भी स्टेट सेक्टर है, वो एज अ प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, उसकी प्राइवेट सेक्टर विल हेल्प ऑल द स्टेट सेक्टर with the state taking the sole responsibility of starting new unit. And the sole responsibility, a monopoly is given to the only the government sector industries, and they have only responsibility, they can continue, they can start a new unit. Only state have the full control, full responsibility to start a new unit. Private sector does not have any kind of sole responsibility to start a new unit. It included 12 industries like fertilizer, machine tools, aluminium, etc. ठीक है. In schedule B, these kind of industries are comes. In third category, consisting of the remaining industries which were to be in the private sector. ठीक है. It deals with the remaining industries which were be in the private sector. These industries were under control of government through Industrial Development and Regulation Act 1951. Okay. All these industries will come under the government through the Act of Industrial Development Regulation 1951. ठीक है, ये सारी इंडस्ट्रीज जो प्राइवेट सेक्टर में होंगी, they will also be in control of the government under the Industrial Development and Regulation Act 1951. ठीक है, ये भी क्या होंगी, गवर्नमेंट के ही कंट्रोल में होंगी, भले ये क्या हो प्राइवेट sectors, private company हो. Next is industrial license. Although there was a category of industries left to the private sector, the sector was kept under state control through the system of license. Okay, ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ थी जिनको हम लोग कैटेगरी थर्ड में रखे थे कि देख इन दी फॉर दी प्राइवेट सेक्टर. मीन्स ऐसी कैटेगरी में भी कुछ इंडस्ट्री थी जो क्या थी, प्राइवेट सेक्टर में आती थी, बट स्टिल दे आर बाउंड विद दी सम रिस्ट्रिक्शन, दैट इज़ दे हैव टू टेक दी लाइसेंस फ्रॉम दी गवर्नमेंट. ओके, नो न्यू इंडस्ट्री वॉज अलाउड अनलेस अ लाइसेंस वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी गवर्नमेंट. ओके, कोई भी न्यू इंडस्ट्रीज़ को स्टार्ट और इस्टेब्लिश नहीं कर सकते until and unless the private sector will not take the license from the government. This policy was used for promoting industrialization in backward region. ठीक है, it is basically done for the promoting industrialization in backward region. Basically होता क्या था कि जो backward region होते थे वहाँ पे no industrialist want to open establish their industries, so that some exemptions were also provided. The one who want to establish their industry at the backward region, they have some easier registration or easier steps for the adopting a different license. Okay, कि उनके पास क्या होता था, अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट क्या होता था बैकवर्ड रीजन में अपने इंडस्ट्रीज़ को ओपन करना चाहता था, तो उनके लिए क्या था कि एक बहुत ईजियर प्रोसीजर होता था कि वो क्या कर सकते थे, लाइसेंस को अडॉप्ट कर सकते थे. इट इज़ डन बिकॉज टू
प्रमोट द रीजनल इक्वालिटी। इसको रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने ये सारे प्रोसीजर्स, ये सारे आइडियाज़ प्रोवाइड किए थे कि द वन हु वांट टू establish their industries basically in the backward region, they have to adopt a license through the very easy procedure। वो easily procedure के थ्रू क्या करेंगे, लाइसेंस को अडॉप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, एंड देन दे स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। इवन एन existing industry had to obtain a license for expanding output or for diversify production। मतलब जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज थी, जो ऑलरेडी रन थी, उनको भी क्या होता था कि लाइसेंस को लेना, अडॉप्ट करना पड़ता था वेन एवर दे वॉन्ट टू एक्सपैंड देयर प्रोडक्शन। अगर उनको अपने प्रोडक्शन को एक्सपैंड करना होता था तो भी उनको क्या करना पड़ता था, लाइसेंस लेना पड़ता था। एंड डाइवर्सिफाइंग प्रोडक्शन, अगर उनको अपने जो भी कमोडिटी, द वन दे आर प्रोड्यूसिंग द कमोडिटी एंड वांट टू produce some other new commodity, they have to also take the license from the government। This was meant to ensure that the quantity of goods produced was not more than what the economy required। It is basically done for the quantity which the economy required should not be more than the goods which the produced by the producers। okay, कि बेसिक इसका मोटिव यही होता था कि गवर्नमेंट लाइसेंस लेने के लिए इसलिए कहती थी व्हेन एवर दे वांट टू एक्सपैंड देयर प्रोडक्शन, कि जितना इकॉनमी में नीड है गुड्स की, बस उतना ही प्रोडक्शन हो। ये नहीं कि अभी प्रॉफिट के लिए क्या करे कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट ज़्यादा अमाउंट का प्रोडक्शन कर ले। इसके लिए उसको बस इतनी ही ऑफर था कि जितना देयर इज़ नीड इन इकॉनमी फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द फूड, so that the every industrialist have to obtain or produce only that much amount of goods। Okay, license to expand production was given only if the government was convinced that the economy required a larger quantity of good। okay, license for expanding production is provided only for those or only in that condition when the government sees that there is need for production of the new commodity, new goods, because the economy wants something more, the need for the economy is more than the before। okay, लाइसेंस के लिए या गवर्नमेंट को ये लाइसेंस प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट की लाइसेंस वाला प्रोसीजर इसलिए भी बेसिकली करती थी और कन्विंस तभी होती थी जब गवर्नमेंट ये देखती थी जो हमारी इकॉनमी है उन्हें भी क्या है, ज़्यादा लार्जर क्वांटिटी ऑफ गुड्स की नीड है, इसलिए वो लोग एट दैट कंडीशन क्या करती थी, लाइसेंस प्रोवाइड कर देती थी। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल कंसेशंस। दो द गवर्नमेंट हैज़ मेजर कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रीज, private entrepreneurs were offered various industrial concession। okay, government has major control over the industries, but some private enterprises also provide the different kinds of industrial concession, means different type of subsidies provided by the private entrepreneurs। in addition, industrial units were given industrial concession such as tax benefits, electricity at a lower tariff to encourage establish their unit in the backward region of the country। Different industrial concession, different industries subsidies are provided for the basically for the development of the industries, especially in the backward region। if they are encouraged, if they got the different type of concession like tax benefit, electricity rate will be reduced or tax rate will be reduced, they will encourage, they will promote it, and they will open their industries especially in the backward region, so that there will be promotion of the regional equality।